मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गवर्नर्स एड्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट वॉकआउट जो किए गए हैं कुछ गवर्नर्स द्वारा ड्यूरिंग इनॉग्रल सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, खासकर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ट्रिगर हुई है। गवर्नर ने गवर्नर्स ने रिफ्यूज़ल किया है कुछ कस्टमरी एड्रेस पढ़ने में अंडर आर्टिकल 176 क्लॉज 1, जिससे कि कंसर्न्स रेज हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और फेडरल बैलेंस के। कर्नाटका गवर्नमेंट तो इवन कंसिडर कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे एक जुडिशल डिक्लेरेशन लाने के लिए इस इशू पर। तो आर्टिकल 176 क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन एवरी ईयर एड्रेस करेंगे, और ये एड्रेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ऑफ इलेक्टेड स्टेट कैबिनेट। गवर्नर जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली कम्युनिकेटर टू द पीपल की तरह एक्ट करते हैं इसमें। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। सिलेक्टिव रीडिंग, स्किपिंग पैराग्राफ्स या वॉकिंग आउट, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी मानी जाएगी। गवर्नर के पास कोई इंडिपेंडेंट फंक्शंस नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कोई पॉलिटिकल एक्टर नहीं है। वो विल जो है पीपल ऑफ द स्टेट को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी आइडियोलॉजी को नहीं करते हैं। और गवर्नर जो है वो कोई पब्लिक स्टेंसेस जो क्रिटिकल ऑफ कैबिनेट पॉलिसी है वो नहीं ले सकते। और लिमिटेड डिस्क्रिशन है उनकी, वो भी पर्सनल नहीं होती है। अलग अलग जजमेंट्स ही बता रही हैं, ठीक है। जैसे नाबम रेबिया जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बता रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है लिमिटेड जो है गवर्नर की डिस्क्रिशन को भी। तमिलनाडु गवर्नर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो गवर्नर की नेगेट नहीं कर सकती इलेक्टेड गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। और गवर्नर जो है वो एक तरह से सिर्फ गाइड, फिलोसफर और फ्रेंड है, एक एडवर्सरी नहीं है। तो चैलेंजेस क्या हैं इसके, कि इससे पॉलिटिसाइजेशन हो रही है गवर्नर के ऑफिस की, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस की इरोजन हो रही है। तो गवर्नर के ऑफिस को एक पैरेलल पावर सेंटर बनाने का भी रिस्क है, ठीक है। और अंडरमाइन हो रही है अथॉरिटी ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिस्टर्ब्ड एरियाज लॉज इन राजस्थान। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान प्रिपेयर कर रहा है कि गुजरात की तरह वो भी एक बिल लाए कि कुछ लोकेलिटीज़ को डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग को प्रिवेंट करना है। तो ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये इम्पॉर्टेंट है कम्युनल हार्मनी को कम्युनल हार्मनी को प्रिजर्व करने के लिए। अब गुजरात ने 1991 में एक सिमिलर एक्ट निकाला था, क्योंकि डिबेटेड कम्युनल राइट्स होते थे वहाँ पर। गुजरात डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जो कि डिज़ाइन किया गया था कि डिस्ट्रेस सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी को प्रिवेंट किया जाए ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन। तो वल्नरेबल प्रॉपर्टी ओनर्स को प्रोटेक्ट करना इसका मोटिव था। होता क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देती थी, तो अगर उस समय वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, खासकर घर, शॉप या लैंड, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहिए होता था। ट्रांजैक्शंस जो हैं अगर वो बिना सैंक्शन के होंगी तो वो वॉइड मानी जाती थी। कलेक्टर जो है वो एक इंक्वायरी करते थे अप्रूवल देने से पहले, और ये देखते थे कि सेल जो है वॉलंटरी है, कोई प्रेशर में तो नहीं की जा रही या थ्रेट में तो नहीं की जा रही। क्रिटिक्स का लेकिन ये कहना था कि रेगुलेट किए कर रहेंगे अगर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को, तो एक तरह से आप स्टेट जो है वो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऑफ नेबरहुड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। इससे कंसर्न्स जो है फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम का, उस पर भी रेज हुआ कि जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि रिलीजन या कास्ट के नाम पर। और लॉ जो है वो एक तरह से फ्री मूवमेंट और ऑर्गेनिक सोशल इंटीग्रेशन को भी कर्ब करता है। जो गुजरात डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है वो ऑलरेडी जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया जा रहा है। अब राजस्थान गवर्नमेंट का ये कहना है कि इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग को वो प्रिवेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो सेम लैंग्वेज ही गुजरात के लॉ में भी है। अब इसमें कुछ जो है वो प्रोटेक्शंस दी गई हैं। जैसे हाई कोर्ट ने कई रूलिंग्स के द्वारा बोला है कि कलेक्टर का रोल सिर्फ इतना ही होगा कि वो ये देखे कि जो है सेल है वो फ्री कंसेंट से हुई है और क्या फेयर मार्केट वैल्यू पर हुई है, और कोई कंसिडरेशन कलेक्टर को नहीं देखनी है। और इसमें गुजरात वाले लॉ में एक ये भी प्रोविज़न था कि नेबर्स को भी कंसेंट देना कि हाँ ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फेयर है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नेबर्स का कोई रोल नहीं होगा इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्रिक्स डिजिटल करेंसी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने एडवाइस किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो एनकरेज करे ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि वो कोलैबोरेट करें यूजिंग डिजिटल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अगर ये मूव की जाएगी तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होंगी, स्पीड अप होंगी सेटलमेंट्स, और डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर भी हमारी कम होगी। तो आरबीआई जो है उन्होंने कहा आरबीआई ने कहा है इंडिया को कि वो ब्रिक्स चेयरपर्सनशिप जो है उनकी 2026 की, वो यूज़ करके मेंबर कंट्रीज़ को एनकरेज करें कि वो
CBDCs जो हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज़ करें या अडॉप्ट करें। अब ये प्रपोजल कहता है कॉमन पेमेंट फ्रेमवर्क बनाओ, ब्रिक्स के लिए ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी उसे जॉइन कर सकें। अब CBDCs क्या है? लीगल टेंडर हैं जो सेंट्रल बैंक डिजिटल फॉर्म में इशू करता है। RBI का ई-रुपी एक प्राइम एग्जांपल है इसका। CBDCs जो है वो सेपरेट डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर्ड होती हैं, किसी बैंक अकाउंट में नहीं, और ट्रांजैक्शंस जो है वो बिटवीन वॉलेट्स भी की जाती हैं, तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल लेजर पर। ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है क्योंकि ये तो जो है बैक्ड बाय अथॉरिटी है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होंगे? CBDCs जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करता है, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर होगा। CBDCs जो है उनको प्रोग्राम किया जा सकता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी, कि मतलब जैसे क्या टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, लोकेशन, मर्चेंट कैटेगरी। CBDCs जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को जो है वो ईजी बनाएंगी और जो है वो इलीगल मनी मूवमेंट को भी रोकेंगी, अनलाइक बिटकॉइन, ठीक है। CBDCs जो है इंडिया को इंटरनेशनल पेमेंट चैलेंजेस जो सैंक्शंस की वजह से होते हैं वो नेविगेट करने में भी हेल्प करेगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इससे रिलेटेड। अब लीगल, रेगुलेटरी और टेक्निकल फ्रेमवर्क्स को हार्मोनाइज करना मल्टीपल कंट्रीज में एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और इमीडिएट रिस्क ये रहेगा कि US कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ट्रंप जो है वो इसको लेकर जो है वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, वो इंडिया पर एडिशनल पेनल्टीज ना लगा दें इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 दिया गया है। एक एनुअल अवार्ड है जो रिकग्नाइज करता है इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और सेल्फलेस सर्विस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हर साल 23 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये अनाउंस किया जाता है। सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही एलिजिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो मेंबर सेक्रेटरी या फिर मेंबर ऑफ NDMA जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो ही एक अवार्ड का डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ASC अर्जुन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है ASC अर्जुन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इंडियन रेलवेज का है, ऑपरेट करेगा ये अलॉन्ग साइड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सोनल, ताकि असिस्ट हो सकें स्टेशन ऑपरेशंस। डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंटायरली विशाखापट्टनम में से, और इक्विप्ड है ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से। पब्लिक अनाउंसमेंट्स कर सकता है ये इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में, और इसमें ये फीचर करता है सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन ऑल्सो विद ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलिंग्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कंट्री की फर्स्ट टेलिंग्स पॉलिसी। टेलिंग्स बेसिकली लेफ्ट ओवर मटेरियल्स हैं फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ माइंड ओर। ये कंसिस्ट करते हैं फाइनली ग्राउंड रॉक, अनरिकवरेबल और अनइकोनॉमिक मेटल्स, केमिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से निकलते हैं। ये यूजुअली बेसिकली जो है आपके लिक्विड स्लरी होती है, फाइन पार्टिकल्स की, मिनरल पार्टिकल्स की, और ये इंटीग्रल होते हैं सेफ और सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स भी, ठीक है। तो डैम, एम्बैंकमेंट्स या फिर कुछ सरफेस इम्पाउंडमेंट्स जो हैं उनको एक तरह से कॉमन स्टोरेज मेथड की तरह यूज़ किया जाता है इनको स्टोर करने के लिए। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स को प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज जैसे कि माइन डम्प्स या टेलिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग माइन से एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब कुछ इंडिया में ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो माइन की जा रही हैं प्राइमरी ओर से, और उनका और ज़्यादा रिकवरी का स्कोप है कंपेनियन मेटल से या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम टेलिंग से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वोटर्स डे। टॉपिक जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने ग्रीटिंग्स सिटीजन्स को दी हैं नेशनल वोटर्स डे पर, जो कि 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है सिंस 2011। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोनिक बूम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने सीस्मोमीटर्स का यूज़ करते हुए सोनिक बूम्स को डिटेक्ट किया है। सोनिक बूम क्या होता है? एक थंडरस नॉइस जो कि एक ऑब्जेक्ट जैसे कि एयरक्राफ्ट जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ मूव कर रहा है वो जो है वो कॉज करता है। जब होता क्या कि इसमें एयर मॉलिक्यूल जो है उस एयरक्राफ्ट के या ऑब्जेक्ट के जो होते हैं वो आसपास वो पुश असाइड होते हैं, और उस बहुत ही तेज़ फोर्स के साथ उसकी वजह से शॉक वेव्स जनरेट होती हैं। और इंटेंसिटी ऑफ सोनिक बूम जो है वो डिटरमिन होती है नॉट जस्ट कि डिस्टेंस कितना है क्राफ्ट और ग्राउंड में, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड में, बट ऑल्सो साइज और शेप ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रंथ कुटीर। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में इनाग्रेट किया है। ये एक रिच कलेक्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की और बुक्स की क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की। तो ये एनहांस करेगी अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स रिगार्डिंग रिच कल्चरल एंड लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसको डेवलप किया गया है थ्रू कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स,
ठीक है, और ये विजन ऑफ ज्ञान भारतम मिशन को भी सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पंदोह डैम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिलीज ऑफ सिल्ट लेडन वाटर फ्रॉम पंदोह डैम इनटू सतलुज रिवर जो है इंस्टेड ऑफ ब्यास, इससे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का एक तरह से नाराज़गी हुई है बीबीएमबी के साथ। तो पंदोह डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है, ब्यास रिवर पर बनाया गया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में 1977 में से बनाया गया था। ये डैम जो है वाटर ऑफ ब्यास रिवर को डाइवर्ट करता है ताकि पावर जनरेट हो सके देहार पावर हाउस पे, और इसको फिर बाद में डिस्चार्ज किया जाता है सतलुज में। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Governor's Address and Constitutional Limits. This topic is important for your polity section. So, recent walkouts by governors during inaugural sessions of state legislative assemblies in opposition ruled states like Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala have triggered constitutional debate. These incidents relate to governors' refusal to read or complete the customary address under Article 176, Clause 1, prompting concerns over the erosion of constitutional conventions and federal balance. So, Karnataka government is reportedly considering even approaching the Supreme Court for a judicial declaration on this issue. Okay, so Article 176, Clause 1 mandates that the governor shall address the Legislative Assembly at the beginning of the first session every year. This address reflects the policies and programs of the elected state cabinet and not the personal views of the governor. The governor acts indirectly as a communicator to the people through their elected representatives. A council of ministers headed by a chief minister must aid and advise the governor in performing these functions. Selective reading, skipping paragraphs, or walking out amounts to constitutional impropriety. Governor has no independent function. He is just a constitutional head, not a political actor, and he represents the people of the state as a whole and not any party or ideology. Several judicial interpretations have also been made, like the fact that governors cannot take public stances critical of cabinet policy. Even the limited discretion given to the governor is not personal, but remote controlled by the Union Cabinet or Union Council of Ministers. So the Constitution explicitly defines the areas of limited governor discretion also. The Supreme Court held that discretionary powers cannot be exercised to negate the authority of an elected government, and governor acts as a guide, philosopher, and friend, not an adversary. So, what are the challenges if this trend continues? So, first, it would be politicizing the governor's office. There would be erosion of constitutional conventions. There is a risk of turning the governor into a parallel power center, and this would also undermine the authority of elected state government. So the next topic is disturbed area laws in Rajasthan. This topic is important for your governance and social issues. Rajasthan is trying to introduce a bill to declare certain localities as disturbed areas to address what it describes as demographic imbalance and improper clustering. So they are saying that this is necessary to preserve communal harmony, and they are building this up with a Gujarat law of similar kind. Gujarat also has this Disturbed Areas Act, which was enacted in 1991 after repeated communal riots. This act was designed to prevent distressed sales of property during periods of violence or intimidation. The aim of this act was to protect vulnerable property owners from being forced to sell assets below market value due to fear or coercion. Under the law, state government can notify an area as a disturbed area based on history of communal violence or mob unrest. Once notified, any transfer of immovable property, including houses, shops, or lands, require prior approval from the district collector, and the transactions which are carried out without this sanction would be considered as void. So, collector is mandated to conduct a formal inquiry before granting approval to ensure that the sale is voluntary and not the result out of any pressure or threat. Critics say that this, by regulating property transactions, the act is enabling the state to influence the demographic composition of neighborhoods. This also raises concerns under the fundamental rights of freedoms, which prohibit discrimination on the grounds like religion and caste. This law also risks curbing free movement and organic social integration under the guise of protection. This state law of Gujarat is already under constitutional review by the Gujarat High Court, and Rajasthan is saying that they want to prevent improper clustering, which basically mirrors the language that is used by Gujarat law. Okay. So time and again, Gujarat High Court has given several rulings while hearing this particular law, and it has clarified that the collector's role is strictly limited to verifying only two factors: whether the sale reflects free will
or free consent, and whether it is at fair market value. No other consideration is permitted. Gujarat law also had a provision that the neighbors had also a role in giving consent to the sale of the property, but the court repeatedly ruled that neighbors have no legal standing in private property transactions. So the next topic is BRICS digital currency. This topic is important for your economy section. So RBI has advised the Indian government to encourage BRICS countries to collaborate on using digital currencies for cross-border payments. This move could reduce transaction costs, speed up settlements, and lower dependence on the US dollar. So into the RBI has said that India should use its BRICS chairpersonship in 2026 to encourage member countries to adopt their CBDCs for cross-border payments, and this would involve envisaging a common payment framework among not just BRICS countries but also more countries which could join in the future. So CBDCs are important because they are legal tender issued by a central bank in digital form. The in India, this e-rupee is an important example. CBDCs are stored in separate digital wallets, not bank accounts, and transactions occur directly between wallets, and the records are maintained on a blockchain-based digital ledger. They are different from private cryptocurrencies like Bitcoin because they are decentralized, unregulated, and not backed by any authority. So, what are the benefits if we use CBDCs? Because they operate on blockchain chain technology, they are immutable and transparent on a digital ledger. CBDCs can be programmed for specific purposes also. Cross-border transactions, which are a major channel for illegal money movement, like in Bitcoin, get prevented through CBDCs. CBDCs also help India to navigate international payment challenges which arise from sanctions or unilateral sanctions, like what we have seen with countries like Iran or Russia. But there would be challenges also because harmonizing legal, regulatory, and technical frameworks across so many countries would be complex and time consuming. There would be also risk of how the US would respond to it, and it could expose India to additional trade penalties. Okay. So the next topic is Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar. This topic is important for your governance section. Sikkim State Disaster Management Authority and Lieutenant Colonel Sita Ashok Shelke have been awarded the Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar in the institutional and individual category respectively. So this is an annual award aimed to recognize and honor the invaluable contribution and selfless service offered by individuals and organizations in India in the field of disaster management. This award is announced every year on 23rd January on the birth of anniversary of Netaji Subhash Bose. Only Indian nationals and Indian institutions are eligible for the award, and a screening committee constituted by a member secretary or a member of NDMA will screen the applications for the award. So the next topic is ASC Arjun. This topic is important for your economy section. So Indian Railways has introduced a humanoid robot called ASC Arjun at Visakhapatnam railway station. So this humanoid robot will operate alongside a railway protection force personnel to assist in station operations. It has been designed and developed entirely in Visakhapatnam using homegrown technology. It is equipped with a face recognition system, and it can make automated public announcements in English, Hindi, and Telugu to assist passengers. It also features semi-autonomous navigation with obstacle avoidance capability. So the next topic is tailings. This topic is important for your economy section. Central government has recently announced the country's first tailings policy. Tailings are basically the leftover materials from the processing of mined ore. They consist of finely ground rock and unrecoverable or uneconomic metals, chemicals, organic matter, and effluent from the extraction process. They usually take the form of a liquid slurry made of fine mineral particles created as mined ore. Okay, effective tailings management is important to the safe and sustainable production of metals and minerals. They can be stored in a variety of ways, but dams, embankments, and other types of surface impoundments are by far the most common storage methods used today. So this policy is giving the guidelines for exploration of critical minerals from primary as well as secondary sources like mine dumps and tailings of existing mines. This new policy has been developed on the idea that a few commodities which are currently mined in India, uh, like the primary ore, may have scope for recovery of companion metals also or elements from the tailings. Okay.
So the next topic is National Voters Day. This topic is important for your governance section. So recently, PM Modi has extended greetings to the citizens on National Voters Day, which is observed on 25th of January every year since 2011 to commemorate the foundation of the Election Commission of India. Okay. So the next topic is sonic boom. This topic is important for your science and tech section. Researchers have used seismometers to detect the sonic booms created by debris from orbit falling back to the earth. So sonic boom is a thunderous noise caused by an object like an aircraft moving faster than the speed of sound. As the object zooms through the sky, the air molecules around it are pushed aside with tremendous force, generating shock waves along its path. The intensity of the sonic boom is determined not only by the distance between the craft and the ground, but also by the size and the shape of the aircraft. Okay. So the next topic is Granth Kutir. This topic is important for your art and culture section. President of India has inaugurated Granth Kutir at Rashtrapati Bhavan, which is a rich collection of manuscripts and books in classical languages of India, which are Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, Odia, Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali. The aim is to enhance awareness among the citizens regarding the rich cultural and literary heritage of India. It has been developed through the collaboration with central government, state governments, universities, research institutions, cultural organizations, and individual donors from across the country, and it supports the vision of Gyan Bharatam mission also. So the next topic is Pandoh Dam. This topic is important for your economy section. So the release of silt-laden water from Pandoh Dam into Satluj River instead of Byas by Byas Management Board has drawn the ire of Punjab government. So Pandoh Dam is an embankment dam constructed on the Byas River in the Mandi district of Himachal Pradesh. This project was completed in 1977, and this dam diverts the water of Byas River to generate power at the Dehar powerhouse before being discharged into Satluj River. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.